Good evening, class. So today we are going to revise chapter number 5 of geography, which is titled as water with the help of MCQs. So in this session, there will be around 30 MCQ questions. You'll be getting around 5 to 10 seconds to write down your answer in the live chat or comment section. Okay. So enough of talking. Now let's get to work. Let me share the screen. Yeah, here it is. I think it is visible to everyone. So, question number 1 of 30. Oceans, seas, rivers, lakes, glaciers, etc. are all different types of water bodies and they are a source of water. Which domain of the environment do they fall under? Do they fall under option number 1, atmosphere, 2, lithosphere, 3, hydrosphere, or 4, exosphere? The question is, which domain of the environment do they fall under? You have 5 seconds. You can write down your answer, full answer, in the live chat section or the comment section. So, according to me, the correct answer will be hydrosphere. Okay, you all have studied this in class 6 also and during the class also. Okay, so we have got it right. Now, question number 2. Our Earth is an enclosed structure like a terrarium where the same water is recycled. So, the same water that existed millions of years ago still exists today. What is that circulation of water from ground to air and back in the form of rain or etc. means precipitation known as. इस सर्कुलेशन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं या नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं? बताओ. This is very easy. I think that majority of you will get it right. So it is known as water cycle. Okay, we have got it right. Now moving to question number 3. Water evaporates and becomes water vapor due to the heat of the sun. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds, and then it may fall on land or in the seas as snow, sleet, or rain. What is this process of clouds becoming water known? Clouds जो water में convert हो जाते हैं और जमीन पे गिरते हैं, उस process को क्या बोलेंगे? Precipitation बोलते हैं, evaporation बोलते हैं, condensation बोलते हैं या transpiration बोलते हैं? बताओ. तो उस process को precipitation बोलते हैं. Majority of you will get it right. Now moving to question number 4. Oceans and seas contain saline. It means salty water, which is not at all potable, not useful for drinking or for carrying out any other domestic activities. So people and animals have to rely on fresh water bodies to get water for drinking, washing, etc. So which of the following are sources of fresh water? Fresh water के sources बताने हैं आपको. Option number 1 में है rivers, springs, seas. Option number 2 है oceans, seas, rivers. Option number 3 है ponds, glaciers, salt lakes. And option number 4 is rivers, glaciers and ponds. Fresh water में बता रहा हूँ. अपनी समझ से आपको ये आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा. So according to me, it will be option number 4, rivers, glaciers and ponds. Let's check it. Yeah, you got it right. Moving to question number 5. There are two types of water bodies, fresh and saline. Saline water bodies contain a large amount of sodium chloride, that is common salt. And that water is not good for most people and animals. So which of the following is an example of a saline water body? The Pangong Tso River, the Sambar Lake, the Amazon River, or Glenwood Springs? बताओ. Saline water body का example पूछा जा रहा है. So as per me, नाम से ही पता चल रहा है, saline मतलब हो गया नमकीन, तो नमकीन सांबर. Okay, so आप ऐसे भी चेक कर सकते हो. सांबर लेक. See, you have got it right. सांबर नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसका पानी नमकीन है, saline. Now moving to question number 6. Many countries face water shortages
This is because our Earth is mostly covered with huge saline water bodies like oceans, seas, etc. Whereas freshwater bodies have only 3% approximately of the Earth on Earth, means of the water on Earth. So what percentage of water is found in rivers? ये परसेंटेज वाला फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा. रिवर्स की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, रिवर में कितने ज्यादा फ्रेश वाटर पाए जाते हैं. Okay, so it will be 0.0001%. Okay, 0.001%. Now moving to question number 7. 3/4 of the Earth's surface is covered with water, and more than 99% of the Earth's water is unusable by humans and most other living things. So when water is so scarce, we must save it for our future generations. Which of the following must be done to save water? Water balloons must be thrown at strangers. Must be thrown है, अगर must not होता तो ये सही हो सकता था, but ये गलत होगा. Taps must be kept running while brushing teeth. No, not at all. अगर आप लोग ऐसा करते हो तो अभी से बंद कर दो इसे करना. Underwater tanks must be installed to save rainwater. This is a good practice and it is being performed in many of the water scarcity. Means the states which are facing the problem of water scarcity are following this underwater tank method. And at fourth option is at least 10 buckets of water must be used to wash each fruit. Not at all correct. So आप लोग सबको समझ में आ ही गया होगा. Option number 3 will be the correct answer. Yeah, you got it right. Now moving to question number 8. So unlike still waters of ponds and lakes, ocean waters always keep moving and circulating. So which are the three main types of movements that occur in oceans? First one is tides, tsunami and El Nino. Second option is currents, La Nina and neap tides. Third one is white cap, swell and undertow. And fourth one is waves, tides and currents. आपने पढ़ा भी है. Three main types of what movements पूछ रहा है यहाँ पे. So it will be none other than option number 4, waves, tides and currents. Now we've got it right as well. Moving to question number 9. Ocean waves are caused when wind moves across the surface of the water. The friction between the molecules in the air and those in the water transfers energy from the wind to the water. Sometimes waves build on top of another and become very tall. So what is a huge tidal wave called? A huge tidal wave को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सुपर वेव बोलते हैं, या सुनामी के नाम से जानते हैं, या डीप करंट के नाम से जानते हैं, या सिर्फ टाइड के नाम से जानते हैं? लॉन्ग वेव, ह्यूज टाइडल वेव. याद आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने साल 2004 के बारे में बताया भी था. इंडिया में भी सुनामी का कहर देखने को मिला था. तो ऑप्शन नंबर 2, सुनामी विल बी द करेक्ट आंसर. Okay, congratulations to those who have got it right. Now moving to question number 10. A tsunami is a huge tidal wave and the tallest recorded tsunami was 1720 feet tall in Alaska. What was the height of some of the highest waves in the 2004 Indian Ocean tsunami? Indian Ocean tsunami में some of the highest wave की हाइट पूछी जा रही है. आप लोगों को पता नहीं होगा, बट फिर भी चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे. It was 100 feet, मतलब 100 फीट तक का टाइडल वेव देखा गया था. और अलास्का में 1720 फीट. आप समझ सकते हो ये अलास्का कहाँ है? इट इज इन यूएसए. यूएसए का 50th स्टेट है, 50वां स्टेट है अलास्का. सोचो यहाँ पे 17 टाइम्स ज्यादा लंबा सुनामी वेव देखा गया था. समझ सकते हो आप लोग. सो इंडिया में जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें हाईएस्ट वेव जो था वो अप्रोक्सीमेटली 100 फीट उसकी हाइट थी. Got it? Now moving to question number 11. A tsunami is a long high sea wave caused by an earthquake or other disturbance in the ocean. It caused a lot destruction to human life as well as public property. How many countries were hit by the 2004 Indian Ocean tsunami? यहाँ पे countries के बारे में पूछा जा रहा है. Okay. So around 62 countries were hit. मतलब 62 बड़े-बड़े छोटे-छोटे countries affected हुए थे. Okay. ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ पहले ही. ऑप्शन नंबर 4. Oh sorry, it was 14. Sorry, I didn't see it, but 14 करना. Got it? Sorry for it. So around 14 countries were affected. 14 countries were affected. Okay. ये याद रखोगे. 2004 में जो इंडियन ओशन सुनामी आया था, around 14 countries were affected.
मैंने आपको 2008 सुनामी के बारे में बता दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, the 2004 Indian Ocean tsunami was one of the most destructive tsunamis ever recorded. It hit 14 countries, okay, and destroyed thousands of cities and villages around the Indian Ocean. So which of the following parts of India got completely submerged in the ocean during that tsunami? मैंने आपको बताया भी था, the southernmost tip of India, okay, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया क्या है, सब लोग बोलते हैं कन्याकुमारी, बट ये कन्याकुमारी नहीं है, वो है इंदिरा पॉइंट, ओके, इंदिरा पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है ये इंदिरा पॉइंट। दिस इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, और ये टोटली पानी के अंदर चला गया था, ओके, सो वी हैव गॉट इट राइट। Moving to question number 13, tides are formed due to the rising and falling of the sea due to the attraction of moon and sun. What is the tide when the water covers much of the shore by rising to its highest level called? ठीक है, हाईएस्ट लेवल है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है आप, और ऑप्शन में हाई टाइड दिया हुआ है तो इस पे ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है, नीट टाइड और स्प्रिंग टाइड पे, चुपचाप हाई टाइड पे क्लिक कर दो, ओके, हाईएस्ट लेवल टाइड, हाई टाइड, दैट्स इट। याद रखोगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से एकदम करना, all the questions are pretty much important for the examination point of view for all of you, okay, so do not neglect any simplest question also. Now moving to question number 14, the rhythmic falls and rises of ocean water twice a day due to lunar and solar factors are called tides, okay, यहाँ पे tides का definition भी आपको मिल गया। When a tide is at its highest point and covers much of the shore, it's called a high tide. And when is a tide called a low tide? Low tide कब होता है? Option number 1, when it's at its highest and recedes from the shore, when it's at its lowest and approaches the shore, when it's at its lowest level and recedes from the shore, or when it's steady. Lowest tide की, low tide की बात हो रही है यहाँ पे, आप लोग अपना दिमाग लगाओ, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ थोड़ी देर में। So it will be option number 3, when it is at its lowest level and recedes from the shore. Let's check it. Yeah, we have got it right. Now moving to question number 15. There are different kinds of oceanic movements broadly divided into 3 types, that are waves, tides and currents. So what are the rises and falls on the surface of the water called? ये राइज और फॉल जो होते रहता है जो सरफेस ऑफ द वाटर, इसे क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं, करंट बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं, या वेव्स बोलते हैं? बताओ। तो राइज एंड फॉल जो होता है इसे हम लोग वेव्स बोलते हैं, ओके, ध्यान से, कंफ्यूज एकदम मत होना, वेव्स बोलते हैं। चलो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, the rhythmic rises and falls of the waters of the oceans twice each in a lunar day are called tides. Which of the following are the main factors causing tide? Main factors पूछ रहे हैं, density of water है, exertion of energy by dormant volcanoes है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 exertion of strong gravitational pull by trees है, तो बिल्कुल भी गलत होगा, या फिर exertion of gravitational pull of the sun and moon है, बताओ। आप लोग सबको पता है, मैंने 2-3 बार डिस्कस किया था इसे, exertion of gravitational pull of the sun and moon will be the right answer. चलो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, on full moon and new moon days the sun, the moon and the earth are in the same line, so the water on earth gets pulled by the moon's gravity. The tides are the highest on those days, so what are those tides known as? उन टाइड्स को, हाईएस्ट टाइड को क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ। नीप टाइड्स बोलेंगे, हाई टाइड्स बोलेंगे, ऑटम टाइड्स बोलेंगे, या स्प्रिंग टाइड्स बोलेंगे? स्प्रिंग टाइड्स, नीप टाइड्स, बताओ क्या बोलेंगे। सो एज पर मी हाईएस्ट यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसे हम लोग आंख बंद करके भी ऑप्शन नंबर 4 स्प्रिंग टाइड्स बोल सकते हैं, एंड वी हैव गॉट इट राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, on the full moon or new moon days the tides are pulled by the moon's gravity and hence are at their highest level, so they are known as the spring tides. हाईएस्ट लेवल पे तो चले जाएंगे तो स्प्रिंग टाइड, जैसे नॉर्मल हाई टाइड्स बोला जा रहा है और ऑप्शन में हाई टाइड भी है तो आप हाई टाइड करोगे, बट हाईएस्ट जहां आ गया तो आप स्प्रिंग टाइड कर दोगे, ओके। और ये लाइन भी अगर एडेड है फुल मून और न्यू मून तो, so when the moon is in its first or last quarter, ocean water gets pulled diagonally and they are known as neap tides. So which of the following create neap tides? Neap tides create करने में किसका योगदान रहता है? First option, gravitational pull of the earth and asteroids. Second option, gravitational pull of the sun and moon. Third option, gravitational pull of the sun and the earth. Fourth option, gravitational pull of the moon and the earth.
I'm giving you 6 to 7 seconds. आप लोग सोच लो अच्छे से, फिर आंसर करो. So the correct answer will be option number 3, gravitational pull of the sun and the earth. Let's check it. We have got it right. Now moving to question number 19. There are high tides and low tides, neap tides and spring tides. The level of ocean water rises and falls according to the pattern of those types of tides. So which natural factor affects the tides most? कौन सा natural factor सबसे ज्यादा affect करता है tides को? First is lava eruption near the coastal areas. Second is the sun and the moon's gravitational pulls. Third is dumping pollutants into seas. Fourth is sinking of the Titanic into the ocean. Fourth option तो बिल्कुल ही गलत होगा. आप 3 ऑप्शन में से चूज करो. Lava eruptions, sun and the moon's gravitational pull, या dumping pollutants into seas. Natural factor पूछा जा रहा है, तो dumping pollutants into seas भी गलत हो जाएगा. अब 1 और 2 में select करना है. So it will be option number 2, the sun and the moon's gravitational pulls. Done. Now moving to question number 20. High tides help us in many ways. They help in navigation by raising the level of water close to the shores, and that helps the ships to enter the harbors with ease. So which of the following is not a result of high tides? High tides कौन सा result नहीं है? ध्यान दोगे, not a result of high tides यहाँ दिया हुआ है. Option number 1, better fishing. Option number 2, generation of electricity. Option number 3, growth of banana trees. Option number 4, better navigation. देखो, generation of electricity भी हो सकता है, fishing भी हो सकता है, navigation भी हो सकता है, but growth of banana से tides का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं. ठीक है, तो ऑप्शन, पूरा ऑप्शन पढ़ोगे, आंसर करने के पहले पूरा ऑप्शन देखोगे आप लोग. अगर हड़बड़ी में करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, मैं बता देता हूँ. ठीक है, सो ग्रोथ ऑफ बनाना ट्रीज, ये बिल्कुल भी टाइड से इसका कोई लेना देना नहीं है. हाई टाइड या लो टाइड कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21. An ocean current is a stream of water flowing constantly on the surface of the ocean in a definite direction. So which of the following are types of ocean currents? Types of ocean current पूछा जा रहा है, बहुत आसान है. Warm and cold, कोई भी जानता है. ऑप्शन नंबर 3. चलो आगे बढ़ते हैं. Now, question number 22. A current is like a vast river within the ocean, flowing from one place to another. Thus, means these currents are caused by differences in temperature and in salinity, and by wind. So, which type of current originates near the equator and moves towards the pole? बताओ, originate होता है इक्वेटर पे और पोल्स की तरफ मूव करता है. इक्वेटर बहुत गर्म जगह, तो वहां पे वार्म ओशन करेंट्स ही इमर्ज होंगे और इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी. चलो चेक कर लिया, बिल्कुल सही. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23. ओशन करेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स इन ओशंस and they are influenced by the temperature of an area. For example, a warm current will bring about a warm temperature in the coastal area. So which of the following is a cold current? Cold current के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है, तो ध्यान से देखना. ठीक है, कोल्ड करंट के बारे में पूछा जा रहा है. ये नाम है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना होगा इसे. लैब्राडोर करंट, ये कोल्ड करंट नहीं है. ओयाशियो करंट, ये कोल्ड करंट है. लेकिन पूरा ऑप्शन देख लेते हैं. ब्राजील करंट नो, अलास्का करंट नो. सो लैब्राडोर करंट इज अ वार्म ओशन करंट एंड ओयाशियो करंट इज अ, बता, कोल्ड ओशन करंट. ओके, सो यहाँ पे ओयाशियो करंट होगा मेरे हिसाब से. लेट्स चेक इट. Yes, we have got it right. Now moving to question number 24. The ocean currents influence the temperature of a place, and depending on their type, they bring about warm or cool temperatures. The areas where warm and cold currents meet provide best fishing grounds in the world. So what kind of weather do these kind of areas experience? क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत गर्मी होती है, न्यूट्रल रहता है या फॉगी रहता है? बताओ. यहाँ पे फॉगी रहता है. ठीक है, ज्यादातर आपको मतलब फॉग का सामना करना पड़ेगा इन सारे एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट मीट कर रहे हैं. ठीक है, चलो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25. ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस टेम्परेचर ऑफ एन एरिया. द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट मीट आर द बेस्ट grounds for fishing in the world, and they are foggy weather. So what becomes difficult in foggy weather? Foggy weather में navigation सबसे ज्यादा difficult होगा. Is it there in the option? Fighting wars तो होता ही है, navigating ships भी होता है, feeding
ब्रीडिंग फिश और गैदरिंग फ्रेश वाटर, तो नेविगेटिंग शिप सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। चलो, we have got it right. Now moving to question number 26. Ocean currents may be warm or cold. The cold currents carry water from polar regions to tropical regions, whereas the warm ocean currents originate near the equator and move towards the equator पे originate होता है और move किधर करता है, बताओ, poles की तरफ, poles, okay. Question number 26, option number 4 will be the correct answer. Now moving to question number 27. There are two main kind of ocean currents, those driven by winds and earth's rotation as they affect the surface water, and those driven by density related forces and they affect the deeper waters. So which of the following usually cause surface currents? Surface currents बताओ किसके वजह से होता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता नहीं होगा, सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, सरफेस करंट्स है, बहुत इजी है, विंड के वजह से होता है, ओके। सरफेस करंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू wind. Now moving to question number 28. Ocean currents are influenced by winds and the rotation of the earth. Surface currents are usually caused by winds, and the rotation of the earth causes the currents to flow clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. So what is this effect known as? इस इफेक्ट को, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने पे मजबूर नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड ऑप्शन नंबर 1 कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। कोरियोलिस इफेक्ट इसे बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट, कोरियोलिस इफेक्ट। Now moving to question number 29. More than 97% of the earth's surface is water is saline. Of the remaining 3%, fresh water is only 0.0001% in the rivers. Which of the following contain most of the fresh water? सबसे ज्यादा fresh water कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है, बताओ, lakes and ponds में, या अरेबियन सी में, या एटमोस्फेयर में, या आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर पाया जाता है। चलो देखा हम लोग, सही है, बिल्कुल सही है। चलो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। ओशन वाटर आर इन स्टैग्नेंट लाइक द वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स और लेक्स आर, ठीक है। सो दे मूव कंटिन्यूअसली कॉजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन द ओशंस। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सच अ मूवमेंट इन द ओशन? क्या इलेक्ट्रिक करंट है वो मूव, या सुनामी है, या ट्रिबुलेशन है, या एक्साइटेशन है, बताओ। इलेक्ट्रिक करंट नहीं दोगे आप, यहाँ पे आप सुनामी दे सकते हो, ओके। दे सकते नहीं हो, वही एक ऑप्शन ही मैच कर रहा है क्वेश्चन के साथ, ओके। Now we have got that right also. Chalo. So we have completed 30 questions of today's session. Now I would like to wish you all the very best. Do very well in all the examinations, okay? And there is one more chapter left of civics that is very easy. I don't think that you require the MCQs revision portion of that chapter. Okay, if you require, then you can just comment in the comment section. I'll provide the MCQ revision set for that also. Okay, so till then, all the best for your exams. Do very well in the exams and just watch the full video. पूरा वीडियो आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितने बार चाहो उतने बार देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।